So, this spinocerebellar ataxia, the term medically what we use is are those ataxias which are autosomal dominant. That means parents se inherit hota hai. Okay, so these are unlike the Friedreich's ataxia where the gene is inherited, one from the mother, one from the father, but both of them are not clinically affected. So it is autosomal recessive condition, Friedreich's ataxia, and it starts very early in life. And the Friedreich's ataxia course is much more aggressive than the SCA, what is known as Spinocerebellar Ataxia, which are inherited in an autosomal dominant fashion. That means a Spinocerebellar Ataxia mein, SCA mein, either the mother or the father definitely has a disease, though probably the disease severity may not be the same as the particular person which we are concerned. So SCA or Spinocerebellar Ataxia में ये जो बीमारी शुरू होता है usually at the age of 20 to 30 इसी age में शुरू होता है. But in Friedreich's ataxia it starts in the first decade, within the first 10 years. So in general SCA or Spinocerebellar ataxia prognosis is much better and the course is also much favorable compared to the Friedreich's ataxia. But as the generation goes, first generation, second generation, third generation, ये Spinocerebellar ataxia में क्या होता है? इसको कहते हैं CAG repeat disorders or repeat trinucleotide repeat disorders. So father का अगर age, it had started at the age of 50 years, the son may get at the age of 30 years, and his son, if he's affected, may get the disease at the age of say 15 years. ये इसको कहते हैं anticipation. जो जब generation बढ़ता है, अगर वो gene inherit abnormal gene for the father or the mother inherit होता है, तो वो ज़्यादा repeat हो जाता है. मतलब repeat मतलब suppose a commonest SCA और Spinocerebellar ataxia इंडिया में जो मिलता है SCA 1, 2 and 3 और certain ethnic communities में SCA 12 मिलता है. Compared to the other countries, there are SCAs about 40 to 50 SCAs are defined now, but we get mainly SCA 1, 2, 3. So a characteristic easily we can differentiate from the Friedreich's ataxia. जो Spinocerebellar ataxia में होता है, gait का balance का problem होता है और बोलने का problem होता है, जो Friedreich's में भी होता है. But कुछ ataxia में like Spinocerebellar ataxia type 2 जो बहुत frequent है, उसमें eye movement का abnormality होता है. वो देखने में अगर patient, हम लोग normal person को कुछ side से लेफ्ट की राइट साइड से बुलाता है तो हम लोग आंखों घुमा के देख सकते हैं. ये Spinocerebellar ataxia मेनली टाइप 2 में आंखों घुमा के देखने में प्रॉब्लम होता है. इसको कहते हैं जो स्लो सैकाड्स है. सो आई मूवमेंट एब्नॉर्मलिटी इज वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम ataxia, and also they develop neuropathy in the legs. Similarly SCA3 जो Spinocerebellar type 3 जो डिसेंट एक्चुअली जो ऑरिजिन होता है प्रॉब्ली पोर्टुगीज उधर से आया था इंडिया में, उसके में डिस्टोनिया करके ट्विस्टिंग ऑफ द हैंड्स लेग्स इस ज्यादा होता है अपार्ट फ्रॉम द ataxia. So and these are very common things in this 1, 2, 3. And another one, Spinocerebellar type 12, only 4 ataxias I am going to tell. The Spinocerebellar type 12 SCA 12 ये certain ethnic communities में होता है. इसमें ज्यादा हैंड शेकिंग ऐसे होता है, बाद में चलने का प्रॉब्लम, बोलने का प्रॉब्लम होता है. और इसके एज ऑफ ऑनसेट जो शुरू होता है अराउंड द 40s में शुरू होता है, बट जनरेशन के बाद अर्ली हो सकता है. तो इन जनरल मैनेजमेंट के लिए ये 3-4 ataxia है, इसमें हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं. अगर बहुत शेकिंग होता है तो उसको क्लोनाजिपाम, प्रोप्रानोल, ऑल दिस टैबलेट्स हम देते हैं, जिसमें शेकिंग टेम्पोरली बंद होता है, थोड़ा सा कम होता है. Most important thing, we advise the patient. There is no specific treatment for any of these ataxias. There is no curative treatment as of now. Nothing like stem cells, etc. First day से हम लोग जो advise करते हैं इन ataxia को, एक balance, gait and balance first assess करके उसको exercise करना है. तो exercise जो balance के लिए होता है, different type of stepping exercise, ball के ऊपर exercise. So what I classically tell the patients is that suppose we are born with say 100 nerve cells in the cerebellum. The cerebellum is the main problem. अगर 50 भी चला गया because of this problem of the genetics, जो बाकी 50 है उसमें हम लोग एक्सरसाइज करके उसको स्टिमुलेट करके इंप्रूव कर सकते हैं, उसका फंक्शन इंप्रूव कर सकते हैं. जो डॉर्मेंट सेल्स है उसको फंक्शन इंप्रूव कर सकते हैं. सो डेफिनेटली एक्सरसाइज, बैलेंस एंड गेट एक्सरसाइज will help to either stabilize in initial stages or it can reduce the progression of this disease, which is very slowly progressive.
Second thing is that we also advise the patient to have speech therapy, and बाद में in the later stages swallowing problem होता है, उसके लिए swallowing problem assess करने होता है. And the most important thing is that you should try to reduce the weight if you're overweight, because full upper part of the body legs के ऊपर पड़ते हैं, so leg जितना हो सकता है weight कम करना है. So they are the 4 or 5 basic things we tell. Some ataxias can have, Parkinsonism, like half shaking होता है, एकदम like SCA2, जो Spinocerebellar type 2, उसमें जैसे लगता है Parkinson disease है. So कभी-कभी इसमें जो Parkinson disease के लिए दवाई देता है, like amantadine और levodopa, carbidopa, ये थोड़ा सा help कर सकता है. जो SCA3 में dystonia होता है, उसमें भी थोड़ा बोटॉक्स इंजेक्शन देके, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देके, नहीं तो मेडिसिन जो डिस्टोनिया के लिए होता है उस देके थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं. So definitely there is a scope of improvement with different types of medicine according to the type of symptoms the patient has, apart from the ataxia. And कुछ ataxias, SCAs, Spinocerebellar ataxia में आंखों में प्रॉब्लम होता है, देखने में प्रॉब्लम होता है, नाइट में प्रॉब्लम होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऑप्टिक एट्रोफी होता है, किसी ataxia में cognition मतलब dementia type का होता है, though dementia is not very common in SCA, Spinocerebellar ataxia. So this is the in nutshell what we practice. In NIMHANS, again, we do a very good physiotherapy, balance and gait exercise करते हैं. इसमें I'll just tell you one more thing, that I had an experience of treating all this, not treating, taking care of these patients with Ayurvedic treatment, because there is no specific treatment for this, and we had done a control study with our Ayurveda colleagues, because we do not have oral medicines. They have given physiotherapy, massage therapy. There could be some improvement, because these are all a pathway through the exercise which increases the brain factors, brain derived neurotrophic factors, etc. So इसमें थोड़ा सा improvement हो सकता है.